In this video, we are going to discuss imperfection or defects in solids. So what do you mean by imperfection, or we can say defect? What do you mean by defect? So any departure from perfectly ordered arrangement of constituent particle in a crystal. एक आपके पास कोई arrangement है, perfectly order है, अब उस order में अगर कोई भी change आ जाता है, it may be possible in any direction, there will be some change from the regular arrangement in crystal is called imperfection or defect. तो जो भी perfectly order arrangement है उसमें कोई भी अगर change आ गया, hence it is called as a defect or called as an imperfection. Now we will discuss the types of defect of imperfection. There are two types of main category. One is known as the point defect and other one is known as the line defect. So first one is the point defect. In this case irregularities exist from the ideal arrangement around a point. अगर हम कोई भी एक point consider करते हैं, for example ये point यहाँ से remove हो गया तो irregularity हो गई, but complete space में नहीं, सिर्फ एक point के around. वो point कहीं भी हो सकता है. So this is a point defect when only at a specific point there is an irregularity. But whenever a complete row is missing और irregularities occur entire row जिसमें involve हो, then it is called as an line defect. So we can define point defect when irregularities arrangement occurs around a point, whereas in case of line defect deviation or irregularities exist in the entire row. Now this row can be in any direction. It can be in this direction or it can be in the downward direction. तो रो की कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी डायरेक्शन में हो, बट जब भी डिफेक्ट होगा देन इन कंप्लीट लाइन इट विल बी देयर. Next is the types of point defect. There are three types of point defect. So first one is the stoichiometric, non-stoichiometric and impurity defect. So as we know, solids are formed when different atoms or ion are closely pegged. For example, ये कोई एक example है जिसमें atoms और ions are closely pegged. For example, अगर NaCl की अगर हम बात करें तो cation and anion present है. So meaning there is cation and anion present in these solids. Different cations and large number of cations and anions are present. So what happened in case of stoichiometric defect? Imperfection occur. Imperfection meaning defect उसमें आता है, but the ratio of cation and anion in the system remain the same. No doubt solid में defect आएगा, but जो ratio of cation and anion है in overall solid that will remain same as that of its molecular formula. जो molecular formula में एक ratio represent है cation anion का, वही रहेगा after the defect also. So that is known as the stoichiometric defect. Whereas in case of non-stoichiometric, whenever the defects occur, the ratio of cation to anion is changes from its molecular formula. जो पहले molecular formula था उसमें जो रेशियो था और अब जो डिफेक्ट के बाद रेशियो हुआ वो सेम नहीं होगा. That is, there is change in the ratio of the cation and anion in case of non-stoichiometric defect. And the third case is the impurity, when we add something into this system. बाकी दोनों केस में हम कुछ भी ऐड नहीं कर रहे थे, बट impurity defect में we add some substance due to which the impurity defect arises. Now we will discuss stoichiometry and its type in detail. So stoichiometric defect, it is the imperfection in crystals are such that if the imperfection in the crystals are such that ratio between cation and anion remains same. ये important point है कि ratio उनका same रहता है as represented by the molecular formula. That is, defect arise होगा पर ratio पे कोई भी change नहीं होगा. It occurs in two type of solids. If we can say, some are the ionic solids
एंड सम आर द नॉन आयनिक सॉलिड्स। तो ये दोनों ही केस में ये डिफेक्ट अराइज होता है, इन केस ऑफ आयनिक as well as in case of non-ionic solid. So type of defects in the non-ionic solid is the vacancy defect and the interstitial defect. Now for example, this is an ordered arrangement and may possible that some of its constituent particles vacate their position. ठीक है, तो अब यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे पेयर में वो रिमूव हो गए, सो दैट अ वैकेंसी इज क्रिएटेड. नाउ एज वी नो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. अब वॉल्यूम तो सॉलिड का सेम रहा पर मास पहले से अब कम हो गया क्योंकि ये दोनों पार्टिकल्स अब अपनी इस पोजीशन पे नहीं है. सो व्हाट हैपेंड इन केस ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट, डेंसिटी डिक्रीजेस. So when some of the lattice sites are vacant, then that solid has a vacancy defect. And what is the cause of this defect? That density decrease. Reason density होता है mass upon volume. वॉल्यूम तो फिक्स रहा पर मास पहले से कम हो गया. अगर मास पहले से कम हो गया तो डेंसिटी भी कम हो जाएगी. नाउ जस्ट ये एक और सॉलिड की पैक्ड अरेंजमेंट है. जब भी एटम्स आपस में ज्वाइन होते हैं, जो इसके बीच का वैकेंट स्पेस होता है इसको हम वॉइड बोलते हैं. ठीक है, वॉइड, और वी कैन से इट इज एन इंटरस्टिशियल स्पेस. तो ये जो खाली स्पेस होगा या किसी भी एटम की अरेंजमेंट में, फॉर एग्जांपल अगर जैसे हम यहाँ पे भी ये अरेंजमेंट बनाते हैं तो ये जो वैकेंट स्पेस है जिसे अभी मैंने डार्कन कर दिया है, तो दिस इज नोन एज अ वॉइड और वी कैन से एन इंटरस्टिशियल स्पेस. So we can compare this space like this point. ये वाले जो space हैं ये interstitial space हो सकता है. Now what happened in case of interstitial defects? When some extra constituent particles are present in the interstitial site. ये same constituent particles हैं यहाँ पे भी present हैं in addition. जिस तरह से यहाँ पे main remove हुए थे, यहाँ पे extra constituent particles इस वैकेंट स्पेस में प्रेजेंट है. तो ओवरऑल वॉल्यूम तो क्या रहेगा, सेम, पर मास पहले से बढ़ गया क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स पहले से बढ़ गए. तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम. वॉल्यूम रिमेन द सेम बट नाउ मास इंक्रीजेस, सो ओवरऑल डेंसिटी इंक्रीजेस इन केस ऑफ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. सो non-ionic solids have two type of defect, vacancy defect and the interstitial defect. In case of vacancy defect, vacant sites are created or in the crystal lattice due to which density decreases. Whereas in case of interstitial defect, some of the extra constituent particles occupy the interstitial sites due to which density of the system increases. Now we will discuss the stoichiometric defect in ionic solids. It is also of two types, Schottky defect and the Frankel defect. So what happened in case of Schottky defect? This is a crystal which is an ionic solid. Now when equal number of cation and anion are missing from their site, जैसे अभी हमने वैकेंसी डिफेक्ट किया था कि कुछ वैकेंसी क्रिएट हो जाती हैं, अब जो वैकेंसी क्रिएट होगी दैट इज बाय रिमूविंग इक्वल नंबर ऑफ cation एंड anion. कहीं से भी equal number of cation and anion are removed, then Schottky defect arises. Electrical neutrality is maintained. कैसे? क्योंकि यहाँ पे पहले A प्लस था, यहाँ B माइनस था, दोनों को जब रिमूव किया तो चार्ज ओवरऑल क्या रहा, बैलेंस रहा. सो वी कैन से इन केस ऑफ Schottky defect, equal number of cation and anion are missing from the lattice so that electrical neutrality is maintained. Now what happened to the density? Now again same thing, density is equal to mass upon volume. Now also mass decrease because cation and anion both are missing, तो mass पहले से कम हो जाएगा, meaning density decreases in case of Schottky defect. And the next important point, this defect arises in those solids, in those ionic solids where is very small difference between the size of cation and anion. जब cation और anion के साइज में बहुत ही कम डिफरेंस होता है, उन्हीं सॉलिड्स में ये डिफेक्ट अराइज होगा.
फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ NaCl, सो NaCl में साइज ऑफ कटायन एनायन में बहुत ही कम डिफरेंस है. एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट occurs in those solids which have high coordination number. Coordination number meaning number of atoms which surrounds a particular ion. अगर यहाँ पे कोई कटायन है तो उसको maximum number of anions surround कर रही हैं, meaning they possess high coordination number. So again I am repeating, ionic solids defect, Schottky defect. In this case, equal number of cation and anion are missing from their lattice point, due to which density decreases. Now, in what kind of a solids this defect arises? Those solids which have high coordination number and those solids which have small difference between the size of cation and anion. And few examples are NaCl, KCl, KBr, AgBr. Now next one is the Frankel defect. In this case, one of the ion is missing from its lattice side and basically that ion is always a cation. Maximum time वो cation ही होती है. So whenever an ion is missing from its lattice side and occupy the interstitial site, जबकि Schottky में वो क्रिस्टल में प्रेजेंट नहीं होता है, बट इस केस में जो भी कटायन मिस होगी वो क्या ऑक्युपाई करेगी? इंटरस्टिशियल साइट, ड्यू टू विच इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन. तो कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज इस पे अराइज नहीं हुआ. एंड द नेक्स्ट पॉइंट एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टोशियोमेट्री ऑल्सो रिमेन द सेम. So we can say this defect is a combination of vacancy as well as interstitial defect. कि vacancy तो create हुई पर वो occupy कहाँ पे हुई? Interstitial site पे. Now in this case density remains same. Density again is mass upon volume, but in this case there is no change in mass क्योंकि जो यहाँ से remove हुआ वो occupy कहाँ हो गया? उसी volume में. So meaning density will remain the same in case of Frankel defect. And this takes place in those solids which have very large difference between the size of cation and anion. Now for example, basically in the silver halides AgCl, तो large difference है size of cation और anion में. Only in that case Frankel defect will takes place, and they must possess low coordination number. फॉर एग्जाम्पल Schottky में होता है जिसमें हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, बट इन केस ऑफ फ्रैंकल इट टेक्स प्लेस इन दो सॉलिड्स विच हैव लो कोऑर्डिनेशन नंबर. नाउ एग्जाम्पल इज AgCl, देन AgI, देन ZnS. In all the three cases the size of cation is very much small. Now one important point, this defect is also known as the dislocation defect. Dislocation क्या कि सिंपल जो एटम या जो आयन थी उसकी पोजीशन डिसलोकेट हो गई है, hence it is known as the dislocation defect. And one more important point, this defect is do not show by the alkali metal. ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि why alkali metals do not show the Frankel defect. तो रीजन अभी मैंने बताया कि साइज ऑफ कटायन और अनायन में डिफरेंस होना चाहिए एंड द साइज ऑफ कटायन विल बी वेरी मच स्मॉल, बट अल्कली मेटल आयंस या अल्कली आयंस कटायंस बहुत ही बिगर साइज की होती हैं जो कि इस इंटरस्टिशियल स्पेस में फिट नहीं हो पाएंगी. यहाँ देखने में तो ये स्पेस ज़्यादा लग रहा है पर एक्चुअल में ये बहुत ही स्मॉल स्पेस होता है. तो वेरी स्मॉल इंटरस्टिशियल स्पेस इज देयर, सो इट रिक्वायर अ कटायन विच इज ऑफ वेरी स्मॉल साइज, एंड अल्कली मेटल कटायंस आर bigger in size. Hence we can say alkali ions or alkali solids do not shows the Frankel defect, or we can say alkali metal halides. जैसे कि हमने NaCl की बात की थी, तो alkali metal halides do not show the Frankel defect. Now one more important question, one common example which can show both the Schottky as well as the Frankel defect is the AgBr. So in case of AgBr, the size of Ag is very much small. Br का भी small है but Ag का भी size small है. Now in case of Schottky it
follows this, there is a small difference between the cation and anion. And in case of Frankel, it follow the rule that size of cation is very much small. So it is shown by only AgBr, both the Schottky as well as the Frankel defect. So if we just take a quick recap, what is a stoichiometric defect? The defect in which the ratio of cation and anion will remain same after the defect arises. It occurs in two type of solids, non-ionic and the ionic. In non-ionic, vacancy and the interstitial defect. In ionic, Schottky and the Frankel. In case of vacancy, a vacancy occur and the density decreases, whereas in case of interstitial, the extra element or extra atoms occupy the interstitial sites, due to which density increase. In case of Schottky, equal number of cation and anion are removed, due to which density decreases. It takes place in the solids having high coordination number and very small difference between the size of cation and anion. There is only a small difference between the size of. These are the important points which you have to learn. In case of Frankel defect, one cation is missing from its sides and it occupies the interstitial sites, due to which electrical neutrality is there and density remains same, as no ion is missed from the complete lattice. It only occupies the interstitial site. It takes place with solids having the low coordination number and very large difference between the size of cation and anion, or we can say size of cation should be very small. cation का size बहुत ही small होगा, तभी वो interstitial sites को occupy करेगी. सो डिफेक्ट्स को लर्न करने का बेस्ट तरीका है फ्लो चार्ट बना के और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को, एग्जाम्पल्स को यहाँ पे साथ में आप कोट करें. Now next is a non-stoichiometric defect. If as a result of imperfection, meaning किसी defect की वजह से in the crystal, the ratio and of the cation to the anion, ratio cation और anion का become different from that of the molecular formula. Stoichiometry में रेशियो सेम रहा, नॉन स्टोशियोमेट्री में रेशियो ऑफ cation एंड anion डिफरेंट हो जाएगा देन दैट ऑफ इट्स एक्चुअल फॉर्मूला. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सॉलिड है जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों प्रेजेंट है, तो इट मे पॉसिबल कि उसमें या तो एक्सेस ऑफ मेटल प्रेजेंट है और मे पॉसिबल इट कंटेन एन एक्सेस ऑफ नॉन मेटल. सो जब भी किसी का एक्सेस हो जाएगा तो उसका फॉर्मूला पहले से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. Now ratio will be changed. So this is the type of non-stoichiometric defect. Now we will discuss different types of non-stoichiometric defect. Now for example, the first of its type is the metal excess defect. अब now for example हमारे पास एक solid है A plus B minus का. अब इसमें metal excess कैसे हो सकता है? When we remove one of the negative ion, अगर हमने इसमें anion vacancy create कर दी, so अपने आप cation ज़्यादा हो जाएगी और वी कैन से मेटल विल बी इन द एक्सेस. और सेकेंड केस वी विल ऐड एक्स्ट्रा cation इनटू इट. तो ये दो केस हैं बाय विच देयर कैन बी मेटल एक्सेस डिफेक्ट, बाय एडिंग cation और वी कैन से बाय क्रिएटिंग द वेकेंसी ऑफ anion. सो नाउ वी विल डिस्कस ईच ऑफ दिस टाइप. So what happened in case of anion vacancy? One of the anion leave its sites and create a hole. एक anion अपनी पोजीशन को वेकेट करेगी, एक होल क्रिएट करेगी, and then this hole is occupied by an electron. ये important point है, so that electrically as a whole it remain a neutral. This hole is occupied by an electron. Now because of this electron, this hole is known as an F center. Why it is called as an F center? Because this hole is responsible to impart the color to the crystal. F center की वजह से crystal को color आता है. वो कैसे? Now this electron will impart color to the center, color to this crystal, hence this hole is known as an F center, because in German language F stands for word Farbe, which means a color. So hence
it is, this center is known as an F center, or sometimes this defect, metal axis defect, is also known as an F center defect. Now how this color arises or how this whole arrangement arises, we will discuss. So again I am repeating what happened in case of metal axis defect. A negative ion missing from its position, then create a hole. This hole is occupied by an electron. This electron is responsible for particular color to the crystal, hence it is known as an F center. So now we will discuss the specific case of NaCl. We take an NaCl solid and we will heat it in the vapor of Na. ठीक है, तो ये important point है. NaCl solid को we will heat it in the atmosphere of Na vapor so that excess of Na is deposited over its surface. ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, जो वर्ड्स को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि व्हेन वी हीट दिस सॉलिड, यही एक सॉलिड की अरेंजमेंट है जिसको हम Na वेपर्स की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, सो दैट आउट एट द आउटर सर्कल ऑफ दिस सॉलिड Na इज डिपॉजिटेड. नाउ व्हाट हैपेंड, Cl फ्रॉम इट्स लैटिस पॉइंट, Cl माइनस है, जैसे यहाँ पे Cl माइनस आयन था, इट विल डिफ्यूज टूवर्ड्स द आउटर सरफेस. तो Cl यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट करेगी और मूव कहाँ कर जाएगी, इसकी आउटर सरफेस पे, दैट इज Cl माइनस. नाउ ऑन दिस सरफेस दिस Cl माइनस कंबाइन विद दिस Na. सो फर्स्ट ऑफ ऑल Na आयनाइज टू फॉर्म Na प्लस इलेक्ट्रॉन and the Cl minus is there. तो अगेन ये दोनों कंबाइन करके NaCl फॉर्म कर लेंगे, बट दिस इलेक्ट्रॉन will move back into the point where this vacancy is created. Now as the electron reaching this point, heating तो मिल ही रही थी, तो ये rise energy gain करेगा, and when electron gain energy and rise to some higher level and falls back, then it impart, if that energy falls in the visible spectrum, then it will impart color to the crystal. So in this whole process, this is the phenomena. There is an Na solid जिसको हम heat करेंगे in the sodium vapor so that sodium deposited over the surface. Then Cl minus, the negative ion, move outside the surface so that an hole is created. At the outer surface, Cl minus react with sodium. So sodium first ionized to form Na plus ion. Now this electron which is released here will move back to the place where vacancy is created. So now this hole will trap this electron, hence it is known as an F centered. Now since energy is in the system, so that this electron, we can say, excited to the higher energy level, and when falls in the lower, and in that visible spectrum it impart color to the crystal. So in case of NaCl, it impart yellow color. Now similar case can takes place with LiCl. In this case we will heat LiCl in the vapors of Li, then same process will takes place, and again in this case it impart pink color. बाकी सारा process same रहेगा, but we are heating LiCl in the presence of excess of Li. Similarly in case of KCl, we will heat in vapor of potassium. In that case it give us violet color. तो ये एक important question आता है किसी भी reasoning form में कि why KCl when heated in the excess of potassium vapors gives violet color. That is because of F center. तो ये हमें पूरा explain करना पड़ेगा with this diagram. ये बनाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको मैंने explain करने के लिए किया है, आप इसी को word form में लिख सकते हैं. Now the next one is by the presence of extra cation. Now this takes place as a metal excess, may also be caused by extra cation occupying the interstitial site. अब जैसे ये एक interstitial एक solid है, solid में जो interstitial space है वो एक extra cation occupy कर रही है, उसके साथ साथ एक electron भी occupy कर रहा है. So we can say it is just like an Frankel defect. तो Frankel defect में क्या होता था, cation positive ion occupied the interstitial site. So here also a cation is occupying the interstitial site. Now one of the example is the ZnO, zinc oxide. So whenever we heat the zinc oxide, it will be forming Zn2 plus half O2 plus 2 electron.
नाउ इट लूजेज ऑक्सीजन एंड टर्न्स येलो. तो जो जिंक ऑक्साइड है ये वाइट कलर का होता है, अदरवाइज वेन एवर इट इज हीटेड इट टर्न्स येलो बिकॉज इट लूजेस oxygen. Now this Zn2 plus occupy the interstitial site and also this electron is occupying the interstitial site so that electrically ये क्या रहे, न्यूट्रल रहे, पर पहले से मेटल क्या हो जाएगा, एक्सेस में हो जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा मेटल आ गया कहाँ पे, इंटरस्टिशियल साइट में. नाउ इन द प्रीवियस केस जो भी हमने अनायन वैकेंसी डिफेक्ट डिस्कस किया था, एंड द सिमिलर वन, देर इज एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, हेंस दे आर एक्ट एज एन गुड सेमीकंडक्टर. रीजन, बिकॉज ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन दे कैन बी यूज्ड एज एन सेमीकंडक्टर. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट इज द मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. अभी जो हमने दोनों केस पढ़े, या तो अनायन उसमें ज्यादा था. Now the next type of non-stoichiometric defect is a metal deficiency defect. In case of metal excess, we have discussed two type of defect. In one case when anion is less, and in another case when metal is high. So both is responsible for the metal excess defect. Now the case arises when there is deficiency of metal is there. So important point, metal deficiency defect maximum time transition elements के केस में होता है, because transition elements they can show the variable oxidation state. Now what do you mean by the variable oxidation state? For example, in one of the case, that is FeO, FeS and NiO, this is a mixture of a solid. The oxidation state is the +1 and the +2. Now what happened in this case, two monovalent ion is missing from its site. ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कि एक A+, दो A+ यहाँ से रिमूव हैं. अब दो A+ की जगह एक वैकेंसी को ऑक्यूपाई कर लेगा A2+, तो ओवरऑल चार्ज क्या रहा, सेम रहा, बट दिस वैकेंसी इज क्रिएटेड एंड so the overall charge will remain the same, but the deficiency of metal is there, due to which non-stoichiometry is arised, meaning their ratio has been changed because number पहले से कम हो गए. अगर पहले 2+ की आयन थी तो अब एक A2+ ने उसकी पोजीशन को रिप्लेस कर दिया. सो फॉर एग्जाम्पल जब हम FeO का फॉर्मूला लिखते हैं, इट इज FeXO, वी कैन से, सो इन दैट केस X vary from 0.93 to 0.96. हम इसको 1:1 नहीं बोल सकते, उसका रेशियो कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है, 0.93 to 0.96. So important point, metal deficiency defect is shown by those solids which contain the transition elements because they can show the variable oxidation state, and in this case we can say metal deficiency defect is due to missing of cation of lower valency, missing of cation of lower vacancy, which is replaced by the higher valency cation. So in general, non-stoichiometric shown in form of metal excess or metal deficiency. In case of metal excess, it can be an anion vacancy, which is also known as an F center defect, and the different color is given in case of different crystal, जो कि आपको लर्न करने हैं, येलो, पिंक एंड वॉयलेट, कैसे वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं. ठीक है. इन केस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, ओनली वन स्पेसिफिक केस इज देयर, जिंक को हीट किया, Zn2+ plus half O2+ electron, this electron and cation occupy the interstitial site, and in case of metal deficiency, maximum transition elements are used which can show the variable oxidation state, and lower valency is replaced by the higher valency cation, due to which vacancy created.